ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हो रहे विशेष सत्र। टीएमसी की राज्यसभा सांसद स्मृति सागरिका घोष ने केंद्र सरकार से अपील की है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि देश की जनता को पूरी जानकारी मिल सके और उनके सवालों के जवाब भी मिले। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान केंद्र सरकार को पूर्ण समर्थन दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को भारत सरकार द्वारा गठित संसदीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनाकर विदेशों में भेजा गया है ताकि आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति का संदेश दुनिया को दिया जा सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों पर संसद में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। देश की जनता का यह अधिकार है कि उन्हें हर जानकारी पारदर्शिता से दी जाए। सागरिका घोष ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो इस मुद्दे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाएं, जिससे लोकतंत्र की आत्मा बनी रहे और जनता का भरोसा कायम रहे। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। As far as the All India Trinamool Congress is concerned, we have always given our full support to the government after the April 22nd terrorist attack in Pahalgam and during Operation Sindoor. We have given our full cooperation with the government and we have strongly supported the union government. When the MPs delegations went abroad to explain India's position to the world and convey our united resolve against Pakistan-based terrorism, we sent none other than our National General Secretary, Mr. Abhishek Banerjee, on this delegation to show just how serious we were in cooperating with the government in putting forward India's position before the world. We have been unequivocal in our condemnation of Pakistan-based terrorism. We are standing shoulder to shoulder with the victims of the Pahalgam terrorist attack as well as with the victims of Pakistan shelling in Poonch, Rajouri and Uri in the border towns. We were the first delegation, a 5-member delegation of All India Trinamool Congress went to the border towns of Poonch and Rajouri. We have seen firsthand the unimaginable suffering of the people there. Homes broken, lives lost, terrible destruction. We are standing shoulder to shoulder with the people of the border towns as well as the victims of Pahalgam. But we now believe that having given our full support to the government, having been unequivocal in our condemnation of Pakistan-based terrorism, we are now supporting the demand first made by independent Member of Parliament, Mr. Kapil Sibal, that there must be a special session of Parliament. We have shown that India is united. In our foreign delegations, we have shown that India is presenting a united face before the world. We therefore demand that a special session of Parliament be held, because in a parliamentary democracy, the foremost platform is the House, is Parliament. This is the apex body in a parliamentary democracy. Therefore, it is in the House that the government must come, take the opposition into confidence, take the people of the nation into confidence. Now that overseas audiences have heard the Indian point of view, it is time that India and citizens of India heard the government's point of view, that the government answered certain urgent questions which we have been raising in the national interest.